उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने. So there is this contradiction within the election commission. 77 है या 78? आपके मुताबिक क्या है? सर हमारे मुताबिक जो है ये 23 है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक जगह 22 दिखा, एक जगह 23 दिखा, इसलिए मैंने दोनों नोटिफिकेशंस आपके सामने. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स गो टू द अदर वंस. नाउ लेट अस, दिस इज नेशनल असेंबली, वुमेन and non-Muslims. Now I come to the provincial assemblies. अब आप इसका ब्रेकडाउन भी दीजिए ना. ये जो 8 किसको गई सीटें? जी. कौन सी पार्टी को? जी. तो अब ब्रेकडाउन ठीक है. ओके. ये अगर आप अपने कुलीग को दे दे, वो जब तक ब्रेकडाउन करता रहे. नहीं नहीं, मेरे पास ब्रेकडाउन है सर. क्योंकि फिर वो आपके मुखालिफ होंगे ना. वो आपके मुखालिफ होंगे ना जिनको सीटें गई हैं यकीन. जी जी जी, वो मैंने लगाया हुआ है ब्रेकडाउन सर. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी, अगर आप ये एक पेज देख लें, वो पूरा नेशनल असेंबली का गिवन है, पेज 194 पे. मेन पेपर बुक. जी, मेन पेपर बुक. मेन पेपर बुक. ये नेशनल असेंबली का है? जी. नहीं, दोनों हैं. नहीं, ये नेशनल असेंबली का है फॉर बोथ रिजर्व सीट्स एंड नॉन मुस्लिम्स. पहले मैं आपको पूरा दे देता हूं और फिर मैं आपको. ये 2 कॉलम्स में आपने बनाए ना. जी. नेशनल असेंबली वाला भी हम कर रहे हैं. जी, नेशनल पार्ट ऑफ द कॉलम. ठीक है सर. ये जो प्रोविंस वाइज है ना, ये नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, बट दे बीन ब्रोकन डाउन इन टर्म्स ऑफ प्रोविंसेस. 194. फिर ये प्रोविंस पार्टी वाइज रिजर्व सीट्स हैं. और देखिए ना करें ऐसे. लेट्स फिनिश नेशनल असेंबली, देन वी गो टू द प्रोविंसेस. नो नो, जस्ट शो अस. वीव अंडरस्टूड 22 or 23 सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू यू शुड गेट. जी. Who has actually got them pursuant to the order of the impugned judgment? Tell us which parties are those, the beneficiaries. Sir, the beneficiary parties are MQM. वो नंबर बताते हैं. MQM got 2, उसको इतने मिले. MQM got how many? Sir, MQM has 1. MQM got 1. ठीक है. Okay, now next comes, and I assume this is in Sindh. Yes, my lord. Then I presume PMLN, People's Party. मैं फिर पंजाब में अगर आ जाऊं तो पीपल्स पार्टी को इसमें नेशनल असेंबली में. आप अभी नेशनल असेंबली बता. जी जी, नेशनल असेंबली, लेकिन वो ब्रेक डाउन होता है प्रोविंस वाइज. जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको 2 मिली हैं. ठीक. और जो PMLN हैं उनको 9 मिली. ठीक. तब भी 20 तो नहीं हो रही ना आपके डिस्प्यूटेड सीटें. 11 हो गई. खैबर पख्तूनख्वा. सर मैं भी चल रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा रहता. 12. सर अब अगर खैबर पख्तूनख्वा पे आ जाए हम, 6. इसमें PMLN को मिली है 1 2 3 4. एंड JUI पाकिस्तान को मिली है 2. एंड JUIF you mean? सर वो पाकिस्तान, JUI पाकिस्तान है. The same party. जी. ठीक. इनको कितनी मिली? इनको मिली हैं 2. एंड पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस को मिली हैं PPP. जी 2. जी. खत्म हो गए. जी. अब अगर प्रोविंसेस में आ जाए हम, कौन सा आप ले रहे हैं सुबह पहले? हो गई पूरी 20 नहीं. जी. अगर सिंध ले लें सर पहले. ठीक है. प्रोविंशियल असेंबलीज. ठीक. सिंध 20 हो गई. 20 हो गई. 20.
اچھا صاحب یہ نیشنل میں 20 بتائی ہیں آپ نے بھی جی یہ 20 کی بتا دی آپ نے بائیفرکیشن جو دی 20 سیٹس بنتی ہیں باقی 22 یا 23 کو میچ تو کر دینا سر وہ مائنورٹیز آپ کریں گے نا یہ میں نے آپ کو نیشنل اس کی بتائی ہیں ریزرو سیٹس وومن کی 3 آپ ایڈ کر دیں نان مسلمس کی تو ہو جائے مائنورٹیز کس کو ملی ہیں وہ 2 جو ہیں آپ نے 2 یا 3 پہلے اس کو پورا کریں اس کے بعد جی مائنورٹیز لے لیتے ہیں سر وہ کس کو گئی پیج 23 سر وہ ملی ہے ایک پی ایم ایل این کو ایک جے یو آئی پاکستان کو اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو اچھا ہم الیکشن کمیشن سے پوچھیں گے کہ 22 ہیں 23 ہو بعد میں سوال جو بھی الیکشن I کمیشن filed both the notifications. نہیں وہ سوال آپ کے چھوڑ رہے ہیں چیک کر کے بتا لیجئے گا کون الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں تو پلیز someone should give place those who he is a counsel in the case he gets priority you don't have a place to sit okay چلیں if you're comfortable you're comfortable ٹھیک ہے چلیں سندھ Now these are reserved seats for women in the provincial assembly. There is of course a bifurcation under the constitution. There are reserved seats for women and non-Muslims in the National Assembly. And then there are under Article 106 reserved seats for women and non-Muslims in the provincial assembly. So, jo disputed seats hain sir, beneficiaries of judgment. जी. Sir ये सिंध में 2 हैं. Where did they go to? एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और दूसरी MQM. And non-Muslims? وہاں پہ نہیں تھی نان مسلم نہیں تھی وہ ان وہ کی 2 غالباً ہوں گے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کتنی تھی ایک PPP If I may now move on the next province to Punjab. جی There are in total 21. 21 women. जी. Out of 66. जी. ये disputed हैं, कुछ disputed नहीं है. Out of 66. जी. 21. $19 have gone to the PMLN. One has gone to the Pakistan People's Party parliamentarians. And one has gone to the Istakame Pakistan Party. And non-Muslims? Non-Muslims for Punjab, 2 have gone to the PMLN. کتنے ٹوٹل پنجاب And 1 has gone to the Pakistan People's Party parliamentarians. 2 ہیں 2 کے ڈسپیوٹ ہے 3 ہیں 3 pe. 3, they were altogether 3. So this is Punjab. Now if I may come to KPK, sir.
The people of Khyber Pakhtunkhwa resent when you call them KPK. So can we respect them and call them Khyber Pakhtunkhwa? I will, Unless you're going to use abbreviation I for all will, the provinces. I will, and I thank your lordship for reminding me. I'm very grateful to your lordship. Sir, Khyber Pakhtunkhwa disputed Women. For provincial assembly are in total 20. Eight go to JUI Pakistan. 5 go to PMLN. 5 go to the Pakistan People's Party parliamentarian. 1 goes to Pakistan Tehreek-e-Insaf parliamentarians. This is a breakaway faction of the PTI in the Khyber Pakhtunkhwa province. Who is it headed by? एक रह गई 19 हुई है जी 19 हुई है. And then there is Awami National Party. So this, I think, the leadership is Khattak Saab and Mahmood Khan. Which Khattak? Aslam Parvez Khattak, who was also the defense minister, and Mahmood Khan, who was the previous chief साहब minister. इसमें ये बताएंगे आप PMLN, PPP और PTI इन्होंने एक्चुअल सीट्स कितनी ऑब्टेन करी थी प्रोविंशियल असेंबली में? Provincial, जी सर. ये नॉन मुस्लिम्स का भी खत्म कर दें. जी मैं वो खत्म कर दूं सर, फिर बताऊं. ANP you said got 1. Sir, 1.